Hi, Jane Vishimoga. Good evening, Inchara. How are you all? Fine, sir. How are you, sir? I'm also fine, thank you. चलो फिर मैं एक पोल लॉन्च करता हूँ, इसका स्टेटस बताओ जल्दी से। देन वी विल स्टार्ट द सेशन, ठीक है? मुझे ट्रेनिंग दे। No, sir. हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है अभी। चलो देखते हैं कौन कौन है क्लास में। ओके, सबसे पहले तो मैं ही हूँ क्लास में, फिर बिंदु, छोग्याल शेरपा, इंशारा शेट्टी, एंड जेनवी गाडग इज देयर, जेनवी गजनूर, जेनवी के रामनगरम, रामनगर, JNV Ramnagar is very punctual. The previous batch I talk about, very punctual students. JNV Shimoga, Pragati, Shivanand Patil, Sneha, SOM, Suprit, and user. उसके बाद there is one more student, DIDWMA. I didn't get the name. Okay. So Paul is also quite right कि सबको screen is visible and I'm audible to all of you. ठीक है? Okay then. And the poll, sharing the results. So, am I audible to all of you? Okay, very good to all of you. देखो, we have to create a such an environment जहाँ पे you can talk to me freely. ठीक है, you can talk to me at any point of time, and you want to discuss any question, you want to discuss any concept, you want to revise the concept. So we have to make such an environment in which I am also comfortable to talk to you and you are also comfortable to talk to me. ठीक है? In that way, the only learning is possible. Got it? Since we have a target, we have to complete the syllabus. So there is a cooperation between me and you is also demanded. ठीक है? तो सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही हमें भी करना है भाई। ठीक है? सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वेरी सेकेंड सेशन, आई गेस, है ना? क्योंकि पहले सेशन में भी जस्ट हैव ओरिएंटेशन एंड बेसिक मैथमेटिक्स. Now this is the very first session of motion in straight line chapter, okay, of Enable Plus program class 11. I welcome you all in this lecture, and I want that everyone is to be participated in polls, and whatever the question I'll ask to you, you have to respond in a attentive manner. Got it? If any point of time the screen is not visible to you, I'm not audible to you, you have to raise your hand or you have to type this thing in the chat box. Okay? And I'm not going to uh, talk about this again and again that you have to use the chat box. Chat box is
completely yours. ठीक है, whatever the doubts you have, you can use it and to send it to over me. ठीक है, so I'm not going to tell you again and again. Okay, chat box is your doubt is yours, and then we will discuss about that. ठीक है, चलो. So as you can see, this is the very first second lecture of motion in straight line. So today the topic that we are going to cover is, let me show you. So today's topic is, first of all, we have an introduction of motion. Then introduction of motion say what do we mean? We will understand why this term arises. Okay, why this term arises and why we are studying it. Okay. Then if we are studying motion, then how many types of motion are possible? That also we are going to discuss in the next. Okay. After that, if we are well aware about the types of motion and what the motion is, what is the utilization or what is the importance of this motion term in our day-to-day life or in physics or in the syllabus. After that, we also want to learn ki what is the important terms in motion. So that is the next step. Okay, what is the important terms in motion? And then we have a brief introduction of the motion in straight line. Motion in straight line का एक brief introduction आपको इससे पहले ही मिल जाएगा when we will be discussing the types of motion. ठीक है, and then these important terms like position, what is position, frame of reference, displacement, distance, velocity. So all of that will be discussed in today's lecture. ठीक है, so सबसे पहले बताओ कि रेडी हो या नहीं हो. थक तो नहीं रहे ना आप लोग? आर यू गाइस फीलिंग टायर्ड? देखो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, मुझे पता है कि इस टाइम आकर के बीइंग ए फीलिंग ऑफ टायर्डनेस तो आती है. ठीक है, इट्स ऑलरेडी 4 o'clock and you guys are, I think you guys wake up at 5 to 6 p.m. Say 6 a.m. So it's a very scheduled day that you guys going through, है ना? But we have to study whatever it is. ठीक है, 1 घंटे की तो बात है, और ये 1 घंटा ये देखो ना, आपको उम्र भर थोड़ी पढ़ना है. You do not want to spend this 1 hour class 4 to 5 for your entire life. This is for just few months. ठीक है, syllabus is completed, practice is going on, then it's perfectly fine. है ना? So try to think in that way कि this class is not going forever. ठीक है, but the learning from this class will be forever. ठीक है, whatever the exam is, the learning from this class will be very useful to you. Okay, so सबसे पहले we will have an introduction of motion. So the very first introduction that I usually give to the student and the student used to know is that motion को we dedicatedly say कि मोशन ना एक तरह का ऑब्जेक्ट भी कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट. लाइक जैसे कि मेरे पास ये गॉगल कवर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास ये ऑल आउट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है. तो इसी तरह से व्हाट स्टूडेंट कंसिडर बिफोर एक्चुअली स्टडिंग व्हाट मोशन इज, कि मोशन भी एक किसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है दैट वी हैव टू स्टडी. बट दिस इज नॉट अ फैक्ट. अब बताओ, आप लोगों को सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है? बताओ, आपके वहां का टेम्परेचर कैसा है? नॉर्मल है कि हाई है? बताओ. नॉर्मल है सर। नॉर्मल है. सो क्या टेम्परेचर को कोई देख पा रहा है? क्या आपके रूम में या जहां पर भी आप क्लास ले रहे हो ऐसे ऐसे शो कर रहा है टेम्परेचर? ओ यहाँ पे तो 27 है, ओ यहाँ पे तो 25 है, अरे यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस नो हो गया सर। करके. ऐसा तो नहीं होता ना. बट नो वी सर। हैव अ फील अबाउट इट. हाँ सर। ठीक है ना? तो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी, इज अ स्टेट. ठीक है, बीइंग कोल्ड एंड बीइंग हॉट इज एन स्टेट, and that is denoted by a property. So similarly, motion is also kind of state. ठीक है, and what the state is, how to achieve the state? To change the position with respect to time and space. This is a simple definition. अब समझ में आया मोशन क्या है? मोशन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, मोशन इज अ स्टेट which
a system can achieve when it's change its position with respect to time. अब देखो मेरा हाथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी यहाँ पे किसी मोमेंट पे दूसरी जगह पे, सो माई हैंड इज इन मोशन वी कैन से. ठीक है. सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑल्सो, ये दोनों टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डिस्क्राइब देम वन बाय वन. So that object is turned into the state of motion. For example, a moving car on the road or a flying airplane. ठीक है. क्लियरली ये देखो, ये जैसे ये कोई कार है, अभी ग्रीन सिग्नल हुआ तो ये मूव कर रही है. काफी तेज स्पीड है इसकी, टरबाइन इंजन लगा हुआ है पीछे, आगे स्टॉप कर गई. ठीक है. चेंज कर रही है पोजीशन लगातार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल. क्लियर है. अगेन यू कैन सी द एग्जांपल फॉर दिस. अरे हु इज दिस? जेनवी शिमोगा. Why are you typing these dots? Could you please unmute yourself and then ask what you want to say? If you don't have to say anything, then just do not disturb the class in that manner. Okay? Understood? Okay. So both the motions you easily observe here. Let me show it again to you. देखो, this is a motion. ये देखो. तो when you see a car moving, देखो वन सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक जा रही है with certain amount of speed that we will discuss later. But what the fact here is that this car is changing its position with respect to time and with respect to space also. Similarly, you can see that this airplane which is taking off from the runway, so it's constantly changing its position with respect to time. ठीक है. आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा व्हाट इज मोशन इज. सो मोशन के बारे में क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ स्टेट. तो मोशन इज अ स्टेट, नॉट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये नोट कर लेना पॉइंट. कलर सबको विजिबल है? ओके. चलिए तो फिर, अगर कलर विजिबल है तो ओके लिखिता. ठीक है. चलो तो फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं. अब वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन. सो क्लियरली वी डिस्क्राइब द मोशन इनटू टू टाइप्स. There are various types of motion you can discuss along with, but any kind of motion that you will be studying will lying into these kinds of motion. ठीक है. The very first motion is the rectilinear motion. It is also termed as linear motion. Linear motion. ठीक. When an object moves in a straight line, ठीक है. Whenever an object moves in a straight line or a linear path, that particular object is termed as in rectilinear types of motion. What the curvilinear motion is? So at each and every point of time, you will see that the direction of motion is constantly changing. The direction of motion is changing. So where direction of motion changes, direction of motion changes. ठीक है. So that particular motion is termed as curvilinear motion. The motion along a curved path. ठीक है. Motion along a curved path. And this is motion along a linear path. Motion along
a linear path. ठीक है. This curvilinear motion can be 2D, 3D, whatever is the motion is. Okay. And this is 1D motion. 1D means it only involves one dimension. ठीक है. Clear. Yeah, it can involve two direction also. Two dimension, three dimension. अब देखो कैसे. Suppose we have this coordinate axis x and y. If an object is moving along this path, this is also a straight line. ठीक है. This is also a straight line. The motion direction of motion is not changing. ठीक है. So that particular, but this motion involved two axes, x axis and y axis. So this is the example of two dimensional motion in rectilinear motion. ठीक है. तो मैंने कहा था ना कि रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मोशन को कवर कर ले. देर इज अनदर काइंड ऑफ मोशन ऑल्सो, रोटेशनल और सर्कुलर. ठीक है. एंड this is also, this definitely involves two axis. If you attach two axis here, y axis and x axis, so this object is changing the direction also and changing the dimensions also. Okay. So this rectilinear motion is also possible in 1D, 2D and 3D. Curvilinear motion is possible in 2D and 3D. अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन 3D में कैसे पॉसिबल होगा, तो लेट मी शो यू. देखो ये प्लेन का मोशन देखो आप, व्हेन इट इज फ्लाइंग. तो देखो जब ये फ्लाई कर रहा है तो इसके पास एक तो ये जेड एक्सिस हो गई. ठीक है. एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस भी हो गई. तो दिस पर्टिकुलर प्लेन इज मूविंग इन थ्री डायमेंशन एक्चुअली. ठीक है ना. बट इफ यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस कार, इट इज मूविंग अलोंग वन डायमेंशन. so there is a only one dimension involved in this motion. ठीक है. बताओ, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कर्विलीनियर और रेक्टिलिनियर. बताओ इसमें से कर्विलीनियर कौन है और रेक्टिलिनियर कौन है. सबसे पहले बताओ यही बात. बताओ भाई, सबके सब बताओ. All the students that are present here, tell me which type of motion is curvilinear? This car motion or this aeroplane motion? Tell me. लिखिता, बिंदु, अंचारा, जेनवी, शिमोगा, विकास, प्रगति, स्नेहा, एवरीवन. नो वन इज रेस्पॉन्डिंग. ऐसा मत करो भाई. ओके, एरोप्लेन इज कर्विलिनियर. व्हाई कर्विलिनियर? हाँ, बिकॉज यू कैन से कि एट अ स्लाइट पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना. डायरेक्शन इज चेंजिंग. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज लाइक दिस, ऐसे उड़ रहा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ कर्विलिनियर मोशन. एंड द मोशन ऑफ कार इज रेक्टिलिनियर. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. ओके, चलिए ठीक है फिर. नेक्स्ट पे बात करते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम. ये कॉन्सेप्ट ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो वाई वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम. ठीक है. सपोज लिखिता को अपने घर जाना है, ठीक है? और इसके लिए कैब ऑलरेडी आ गई है, हालांकि गूगल मैप से सब कुछ कनेक्टेड है, सो देर इज नो प्रॉब्लम. बट वी आर इन अ वे कि देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ गूगल मैप. सो लिखिता हैज टू टेल द वे टू द हाउस टू दैट कैब ड्राइवर. ठीक है लिखिता. लिखिता, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ. मुझे एक हेल्प लगेगी, ठीक है, इस चीज को समझाने में. कैन एनीवन अनम्यूट देयर सेल्फ. बिंदु, शेरपा, शेट्टी, जेनवी, मुखला, रामनगर, शिमोगा, लिखिता, मान्या. आई थिंक मान्या ने कल ओपन किया था कैमरा. मान्या, कुड यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक. मान्या, आर यू देयर. अरे कोई भी एक ओपन कर लो ना माइक. मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला उससे, ठीक है. डोंट अफ्रेड ऑफ. विकास, कैन यू ओपन द माइक. अरे
ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कोई भी अनम्यूट नहीं कर रहा। विकास ने किया है, ओके चलो, विकास और मान्या दोनों ने किया है। ठीक है विकास, तो आप मुझे बताओ, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. हेलो। हाँ हाँ, मान्या। अब मुझे ना आपके घर जाना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीच टू योर हाउस। सो एंड आई एम एट द JNB। ठीक है, सो हाउ डू यू टेल मी द वे? कैसे बताओगे रास्ता? Direction. टेल मी द वे टू योर हाउस, और टेल मी द वे टू द मेस इन द JNB itself। Like बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मेस में जाना है, भूख लगी है मुझे बहुत। where you have to go from like to the way to mess. हाँ, Take straight and move फ्रॉम forward वेयर? from where you are, like लाइक आई एम academic सिटिंग इन योर क्लासरूम राइट नाउ, देन academic block. From there, you you will take a reference ना, कि from where you have to start the motion. from the academic block, from your ओके। class, हाँ हाँ। 11th class, हम्म। go straight for 50 meter. गॉट इट। turn दैट्स ऑल आई वांट। turn अभी तो left. बंद होगी ना मैच, लेकिन खाना तो मिलेगा नहीं, अभी तो फायदा नहीं है Snacks, जा करके उधर। snacks मिलेगा सर अभी. ओके, so what the point here is, everyone has to understand that you can't give a way to anyone without taking a reference. ऐसा possible है क्या? Without taking reference you are telling the way? You No, sir. must have to take the reference. You must have to identify some point from where you are measuring the distance. Like Manya has measured the distance from academic block. Like I am saying you ki, do not consider any point, then tell me the distance, then tell me the way. It is not possible, right? It's not possible. You have to take a reference. You have to take a position from where you are telling me the way. Is it clear to everybody? Or I re-explain it again? Everyone clear है? ठीक है. So that particular point, when you take a reference from where you are measuring the distance, from where you are observing a motion, ठीक है. Suppose you are standing on earth, ठीक है, on ground, and a car is moving, ठीक है. That is another case. Second case is when you are inside the car and you observe the outside. In both the cases, what will happen? When you are outside the car, na, standing on the ground, ground is not moving, but the car is. Why the car is moving? Because it is changing its position with respect to time. That's a very simple case. Okay. But how can you tell that car is changing the distance? Because you are measuring ground. You are seeing it from yourself. Okay. From your end, you are seeing that that particular car is moving on the road and it's changing the distance with respect to time. So that is why in the definition of motion, I have said the motion is nothing but the change of position with respect to time and space. So that particular system in which you are standing and observing some kind of motion is termed as the frame of reference. Okay. So if I just define the frame of reference here, you can have the definition also. The frame of reference is a system of coordinate axes attached to an observer who has a clock with him to record time, with respect to which he can describe the motion of an object. Suppose मान्या कहीं स्कूल के बाहर पे खड़ी हुई है. It's standing on the ground. So there is a coordinate system attached to the manya. Okay. And it is not moving. So which we can consider that it is standing on the origin. Okay. Now if a car moved in front of her, then she will definitely say that this car is changing with respect to time. Its position is changing with respect to time and with respect to the coordinate system which is attached with the manya.
दैट इज वाई शी इज एबल टू टेल ना. सपोज करो मान्या भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड दैट पर्टिकुलर कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. क्या अब वो कार मूव करती हुई दिखेगी? No, sir. बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज चेंज. अब मान्या जहां पर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. समझ रहे हो? सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेटिविटी. तो मोशन इज नथिंग एब्सोल्यूट हियर. आप बोलो कि कोई भी मोशन एब्सोल्यूट है, नहीं. मोशन इज रिलेटिव. देखो, व्हेन यू आर इनसाइड द कार, जस्ट ऑब्जर्व आउटसाइड. यू सी दैट दिस ट्री इज कमिंग अप टू यू. ठीक है. दे 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 विल फील दैट दे आर रनिंग बिहाइंड अस. होता है ना ऐसा फील? एंड वी आर स्टैंडिंग इन द कार, वी आर सिटिंग इनसाइड द कार. With respect to us, the car is not moving. So we can say that when we are inside the car is in rest with respect to us. So the frame that is attached to us telling us कि car is in rest. Because of that frame of reference, the car is not changing the position. ठीक है. Let me show you something here. So there are two systems that I have taken here. Let's say this is also y and x, and this is also y and x. So there are two frame of reference. One is the frame of reference of this boy or girl, and one of the frame which is attached to this bus. Suppose this bus is moving with a speed of 10 meter per second. Okay. And this particular man is standing in rest, which means the velocity is zero. So whenever the bus will change its position, it will observe that, he will observe that, and he will say that this particular bus is in motion. Clear? Now let me ask you something. If the speed of this particular man is also 10 meter per second and the bus is moving with a constant speed of 10 meter per second, then अब ये क्या ऑब्जर्व करेगा? मोशन ऑब्जर्व करेगा या फिर रेस्ट? Rest. Rest, sir. एवरीवन हैज टू आंसर. क्योंकि यहाँ पे ना ये ऐसा सवाल होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये अभी समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ये पूरी 11th में परेशान करेगा. ठीक है. तो आई थिंक सबको ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि हाँ ये रेस्ट में. ठीक है. विच मीन्स कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल समझ में आ रहा है. ठीक है. अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. इट्स अ कोऑर्डिनेट एक्सेस. तो मैंने यहाँ पे क्या बना रखी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही तो बना रखी है. अब जैसे ही ये बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये एक्स एक्सेस में पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं? तो सम कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग और नॉट? टेल मी. सम कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग Yes, एंड sir. Yes, कोऑर्डिनेट sir. एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. सपोज ये कार, ये जो बस है, ये इस तरफ मूव कर रही हो, इस तरह से, देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम both the coordinate are changing or not? Yes, sir. ठीक है. So it is a, the frame of reference is coordinate system basically that we attached. ठीक है. And that is particularly attached to the observer. ये तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब ये खुद रेस्ट में होगा या ये इससे कम वेलोसिटी पे होगा. ठीक है. अब मुझे ये बात बताओ, कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या जहां पे हम रेस्ट में हो सकते हैं? इज देयर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉसिबल इन विच वी आर एब्सोल्यूट रेस्ट? क्या आप रेस्ट में हो? मान्या, क्या आप रेस्ट में हो? बिंदु, लिखिता, विकास, शिमोगा, बताओ, क्या आप रेस्ट में हो? एनी वन ऑफ यू? Yes, sir. Sir. क्या मैं रेस्ट में हूँ? Yes, sir. ठीक है. Yes, विद sir. रेस्पेक्ट टू यू ना, Uh, यू आर सेइंग दैट आई एम सिटिंग हियर, आई एम नॉट चेंजिंग माय पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो आई एम इन रेस्ट. बट इफ आई ऑब्जर्व माई सेल्फ फ्रॉम मून, तो क्या मैं रेस्ट में हूँ? you're in motion. यू आर इन मोशन, यू आर ऑल्सो इन मोशन. इज इट? Yes, sir. So that is why motion is relative. Motion is nothing absolute here. ठीक है. Nothing is absolute.
So this is a very important point to note down, that motion is relative. Motion is a relative state. ठीक है. For someone you are in motion, for someone you are in rest. Okay. Suppose Manya and this another person name is, let's say, Likita. So Manya and Likita are Manya is standing on ground and Likita is sitting inside a car which is moving with 40 kilometer per hour. Okay. There is a car which is moving. देखो कार थोड़ी अच्छी नहीं है, ओल्ड ओल्ड फैशन है, पर ठीक है, काम चला लेंगे अपन. ये मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है. So this car is moving with 60 kilometer per hour, and here one of the person is standing and one of the person is inside the car. Okay, and it's in ground. So basically we assume the rest frame to the ground. ठीक है, तो ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम और रेस्ट फ्रेम, जहां पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज जीरो. ठीक है. देखो, अब जब ये जो ऑब्जर्वर है विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इसके रेस्पेक्ट में, टू रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विच इज ऑन द ग्राउंड, दिस कार इज इन मोशन और नॉट? Motions. मोशन. एवरीवन हैज टू आंसर. Yes, sir. मोशन, मोशन. वेरी सिंपल. But suppose now they exchange their seat. This person goes to the car because he also want to drive the car. ठीक है. And this person want to stand on the ground. ठीक है. अब क्या होगा जब ये वाला पर्सन अंदर से, कार के अंदर से ऑब्जर्व करेगा बाहर वाले पर्सन, द पर्सन विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड. ठीक है. तब अब पहले दो में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको बताना है एक एक करके. When a person is inside the car which is also moving with 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कार इज इन रेस्ट और इन मोशन? Rest. रेस्ट में हो. Everyone is saying that. Okay, very good. Rest, because car is not changing its position with respect to the observer inside the car. But when this particular observer which is sitting inside the car observe outside, then what will happen? ये ग्राउंड वाला जो बंदा है ना, ये इसे रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? Motion में दिखेगा. मोशन. दैट इज वाई. अब देखो वो खड़ा हुआ तो रेस्ट में ही है ना, एक्चुअली में तो कार मूव कर रही है. दिस इज द यस सर. ब्यूटी ऑफ फिजिक्स. ठीक है. तो दैट इज वाई मोशन इज अ रिलेटिव स्टेट. ठीक है. मजा आता है ना मोशन को पढ़ने में, मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगता है ये. ठीक है. सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. और इससे पहले ना आई विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग, प्लीज नोट इट डाउन. वी हैव two types of frame of reference. Frame of reference. The first one is inertial frame of reference. Inertial frame of reference. अब inertial frame of reference क्या होंगी? Which is having zero velocity or a constant velocity. या तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी या फिर मूव ही नहीं कर रही. The absent here is of acceleration. Acceleration is, sorry, zero here. ठीक है. I think you guys now aware about the acceleration, but we will be having a discussion about it. No worries. So acceleration of the frame is zero, so then that frame is termed as inertial frame, and the second one is non-inertial. तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा इसमें. Non-inertial frame of reference. Non-inertial frame में velocity is not
constant, which means acceleration is also not c. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्टली डिस्टेंस. So distance is nothing but the actual path traveled by the body. Actual path traveled by an object in motion. मोशन में होगा तभी तो ट्रेवल करेगा ना. विदाउट मोशन देर इज नो ट्रेवल पॉसिबल. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between final and initial point of the journey. ठीक है, ऑफ द जर्नी. क्लियर है? और देखो ये तो इंफॉर्मेशन सभी जानते होंगे. एंड ऑल्सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है. एंड दिस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर तो सभी को पता होगा ना. Yes, sir. स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. ठीक है, ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कुछ रिलेशन हम देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट is always less than or equals to distance. This is the first relation. ठीक है. Second, we can say displacement can be zero, positive Negative. and negative. Very good. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों पॉसिबिलिटी है, बट डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव. Positive. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो. डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, जब हम ट्रेवल ही नहीं करेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिस्टेंस इज जीरो. ओके, बट इफ हैव वी हैव ट्रेवल्ड a little bit, then in that case also distance is not zero. So it's better to write that distance, just a second, distance is greater than, not equal. ठीक है, तो ये few points हैं, you must have to remember these points. After that, speed and velocity, I think ये भी सभी को clear होगा what is speed and what is velocity. Speed is nothing but, let me define speed, is the change of distance with respect to time taken. Similarly, velocity is the change of displacement with respect to time taken. अब इसमें से वेक्टर कौन होगा? तो जिसमें वेक्टर क्वांटिटी आ रही है दैट इज अ वेक्टर. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसमें स्केलर क्वांटिटी आ रही है दैट इज अ स्केलर. स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर. ठीक है, सेम सेम थिंग यू कैन से. Displacement is less than equals to distance, so we can say the velocity is less than equals to speed. Displacement can be zero, positive, negative, so velocity can be zero, positive, negative. Distance is always greater than zero, but in this case speed can be zero. Okay,
we can having a motion start from rest. तो rest से अगर start कर रहे हैं तो in that case velocity is zero as well as speed is also zero. ठीक है. Now let me brief you about, अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बनाया था पर वहीं पे कर देते. चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी, तो मैं इसे यहाँ पे बता रहा हूँ आप. ठीक है. इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ठीक है. सपोज देर इज अ ट्रैक and this particular object is traveling through this track up to this point. Okay. So at each and every point, the speed of this particle is being changing. From here to here, it will increasing. From here to here, it will increase. Here to here, it will decrease. So at every point of time, each and every point of time, if you will see throughout the journey, the velocity or the speed of the object is not constant. Can anyone have an objection in that case? बताओ. चलो एक और आसान सा एग्जांपल पकड़ते. ठीक है. सपोज यू आर इन योर स्कूल, सॉरी, स्कूल में तो आप हो, इसमें सपोज करने की क्या बात है. यू आर इन योर हाउस एंड यू वांट टू ट्रेवल टू द मार्केट. ठीक है. एंड यू हैव अ स्कूटी, एक्टिवा 5G और 6G वट एवर यू आर हैविंग. ठीक है. और साइकिल, साइकिल से भी काम चला सकते हैं अपन. आई यूज टू ट्रेवल विद साइकिल एंड बाइसिकल बेसिकली. सो सपोज यू आर ट्रेवलिंग विद बाइसिकल और स्कूटी from your house to the market to buy some grocery item. ठीक है. You are going there and when you are coming back, ठीक है, there are lots of breakers in the road and there is crowd, there is traffic. So I think none of you, none of you in your life observing that कि you are moving from your house to that particular point if it is crowded and have breakers with a constant speed. If is it possible to travel to that particular grocery place with a constant speed? बताओ. नहीं ना. Because when there is breaker you have to apply brakes, when there is crowd you have to move slow, when there is nothing you have to accelerate. So at every point of time you are changing your speed, you are changing your velocity. Clear? Then what if I want to ask, if I want to summarize this velocity. ठीक है. सपोज आप ग्रोसरी आइटम खरीद करके वापस घर आए एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इन द फ्रंट ऑफ योर गेट ऑफ योर हाउस, and you just see me and I just ask you ki what is the velocity that you are traveling with and what is the speed you are traveling with. Are you able to answer? No, because there is no constant speed throughout which you are traveling. So that is why you have to give a common answer to me. And what you will do in that case, you know ki speed is nothing but a change in distance divided by time that I have taken. So suppose you have started your journey at 9 a.m. and finished that journey at 10 a.m., which means you consumed 1 hour. Okay? And the distance from your house to that grocery place is showing in the odometer that is being placed in the scooty or any like any vehicle. So in that odometer is saying that you have traveled 20 meter and you started your journey 9 a.m., finishes that journey 10 a.m. So what is the time that you have taken? The time taken is 1 hour. Okay. And the distance traveled by you is 20 kilometers. Then what you will say? You will say that, okay, so if I cover this 20 kilometer with this 1 hour, so my speed would be around 20 kilometer per hour. So what is that speed? That speed is the average speed. Clear? I think this is the best explanation from my side. So that is the average speed, guys. Clear? Same goes for the average velocity. Average displacement that a particle have taken divided by the time taken by that particle to travel that particular displacement.
अब देखो यहाँ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू मस्ट फोकस ऑन. सपोज in a straight line journey also, we will say there is a straight line and the distance of this is 20 meter, let's say, and you are traveling from here to here and then again returning back to this point. Okay, so you have returned back where you have started. So the total distance that you have covered is 40 meter. कोई doubt है इसमें? No doubt. But what thing you have did ना, when you started it's 9 a.m. When you reach to this end it's 10 a.m. Or let's say we will consume this in minutes, so we will have this time frame is also in minutes. Okay, so suppose you have, okay, you have taken 10 seconds to move from this place to this place, and after that you have taken a rest of 10 seconds. 10 second क्या किया आपने? रेस्ट किया. And after that again you have taken 10 seconds to reach the final place. So total time, when you calculate the average velocity na, so what the most student will do कि अच्छा 10 second गया, 10 second वापस आया, 20 meter, 40 meter is the distance, total time will be 20, the average velocity will be 2 meter per second. That is incorrect. That is not correct, because we have to tell what is the time taken, total time taken. Ultimately you are reaching that place in 30 seconds na, you are reaching that place in 30 seconds. So your speed will be decided on the basis of time that you have spent to complete that journey. That is why one will assume na, okay, 20 meter is covered in 30 seconds. So this person is moving averagely with 1.5 meter per second. Very good, Jane Vishimo. So that time that you are taking in rest na, you also have to consider. 40/3 होगा ना, 4/3 मीटर पर सेकेंड, जैन में शिम होगा. क्या करते हो यार, आपने तो मुझे ही गलत कर दिया था. 4/3 मीटर पर सेकेंड, 1.33 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर है सभी को? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? है Yes, ना? sir. हाँ, तो बस यही है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, सिंपल है. तो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला फॉर दिस. एवरेज स्पीड से ही याद रख लेना, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को सेम ही काउंट करेंगे. ठीक है ना, until and unless there is a turn. ठीक है, एवरेज स्पीड इज not always the magnitude of average velocity, always remember. ठीक है, average speed is what? Total distance divided by total time taken. Clear है? And average velocity is the total displacement by again total time taken. ठीक है, टोटल टाइम taken. चलिए, तो ये तो हो गई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात. चलो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड को. ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर, एवरेज स्पीड is not the magnitude of average velocity. We usually say in a straight line motion ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, we usually say that इसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी के इक्वल. कह देते हैं ना, वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकिंग टर्न, बट इट इज नॉट इन द केस एवरेज स्पीड. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर एवरेज स्पीड इज डिफरेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट. हालांकि स्पीड एंड वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, बट फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन the speed can be
termed as a magnitude of the velocity until and unless there is a turn in the motion. क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है भाई? हाँ सर। हाँ, अच्छा कोई जोक सुनाओ फिर, अगर बीइंग टायर्ड ना, चलो एक जोक क्रैक करते हैं फिर, बताओ। मैं सुनाऊं एक जोक? यस सर। चलो एक जोक सुनाते हैं फिर। पता क्या हुआ, संता और बंता थे, दो फ्रेंड है, ठीक है। तो संता ने कहा कि संता की शादी हो गई थी। तो संता बोल रहा है बंता से कि मैंने अपनी वाइफ को ना बीए करा दिया, एमए करा दिया, बीएड करा दिया, एलएलबी करा दिया। मतलब पूरे डींगे मार रहा था उसके सामने। मैंने ये सब पढ़ा दिया उसे। मैंने कहा अच्छा। तो बंता ने कहा कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अब बंता बताओ क्या बोलता है। बंता बोलता है कि अच्छा तूने बीए करा दिया, एमए करा दिया, बीएड करा दिया, एलएलबी करा दिया क्या? हाँ। तो एक अब अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी भी करा दे। मजा आया ना भाई? बताओ, वो खुद शादीशुदा है और बोल रहा है कि शादी करा दे। कैसे कैसे लोग हैं। वो मीम है ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो दैट दैट इज डेडिकेटेड टू बनता। क्लियर है? तो आप लोग ऐसा मजाक मत करना अपने दोस्तों के साथ। चलो तो ठीक है, गेट बैक टू द वर्क यार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खत्म करना। हाँ, जेएनवी। कौन से जेएनवी ने रेज किया है भाई हैंड? अरे जोक पसंद नहीं आया क्या भाई? ऐसा मत करो यार। चलो देखो, ये मेरी डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम। ठीक है। अब देखो, मान लिया ये कोई कर्व है मेरे पास, डिस्टेंस टाइम का कोई कर्व है। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। सो मैं क्या कहूंगा, मुझे पता है कि एस टी ग्राफ का कर्व, हालांकि हम ये सब डिस्कस करेंगे बाद में, बट टू अंडरस्टैंड द एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड वी मस्ट हैव टू ड्रॉ दिस। तो अगर मैं कभी भी आपसे इंटरव्यू में, मैंने बहुत पूछा है कि एस टी ग्राफ का कर्व का स्लोप क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, एस बाई टी पूछ रहा है वो। एस बाई टी इज नथिंग बट डिस्टेंस बाई टाइम विच इज वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दो पोजीशन लेता हूँ, लेट्स से दिस पोजीशन इज S1 एंड दिस पोजीशन इज S2, ठीक है। और इनका टाइम टेकन भी मैंने ले लिया T1 और T2। क्लियर है? अब बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं कि S2 माइनस S1, S1 से S2 तो गया टोटल, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T। सिंपल सी बात है। क्लियर है? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। किसी को कोई डाउट है इसमें? आई थिंक नहीं होगा, है ना? अरे विकास रुको भाई, इतना आगे मत बढ़ो। अब देखो, इंस्टेंटनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटनियस, इंस्टेंटनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। अभी कोई टाइम बता सकता है मुझे कि क्या टाइम हुआ है? बताओ भाई, टाइम फोर क्या हुआ है? फिफ्टी फाइव 4:55 सर। 4:55 is the instant. At that particular instant means you are talking about specific time, ठीक है। क्लियर है? जैसे आप स्कूटी से अपने बाजार जा रहे थे ना ग्रोसरी लेने, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड एट 9:32, व्हाट इज द स्पीड एट 9:15, व्हाट इज द स्पीड एट 10 a.m. एग्जैक्टली, so that is what I'm asking is the instantaneous speed or instantaneous velocity, ठीक है। So velocity at a particular instant is termed as instantaneous velocity। अब देखो, इसे मैथमेटिकली कैसे डिराइव करेंगे।
अब मुझे ना T1 की वैल्यू में वैल्यू से ज्यादा समझ में आता है, तो T1 की वैल्यू मैंने ले ली 2 सेकेंड। ठीक है, अभी मुझे 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। ठीक है, because we can only have the total sorry we can only have the change in distance। ये बात याद रखना, ये आसान टर्म्स नहीं है जिन्हें हम समझ के बैठ जा रहे हैं आसान, ये चेंज इन डिस्टेंस है। तो 2 सेकेंड पे चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, कोई देखें कितना दिमाग है आप लोगों में, बताओ जल्दी बताओ। एट 2 सेकेंड व्हाट इज द चेंज इन डिस्टेंस बताओ, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस कितना है, मान्य बताओ जरा, क्या डिस्टेंस चेंज हुई T1 पे? अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, चुप मत होया करो यार। No change. कोई चेंज नहीं है, T1 पे तो S1 पे ही है वो, बताओ। एट T1 द पार्टिकल इज एट S1 और नॉट, क्लियरली Yes. बताओ सब। ठीक, Yes, sir. तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? No change. Zero, नो, sir. जीरो Zero. चेंज। सो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो उसके लिए अपन क्या ट्रिक लगाते हैं, देखो T2 जो मैं लूंगा ना, मैं T2 ले लूंगा 2.000000000001। अब ये बताओ, इसमें और इसमें कितना फर्क है? 0.0000. जीरो, जीरो, वन, है ना? ये शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ज्यादा जीरो वन नहीं। ठीक है, मतलब ये चेंज क्या बहुत बड़ा है? टेल No, मी, sir. क्या No, sir. बहुत ज्यादा No, छोटा है? sir. Yes, sir. Very small change, sir. पर है तो ना, पर है तो, हो गया हमारा काम। हमें क्या चाहिए था? चेंज इन डिस्टेंस चाहिए था। और चेंज इन डिस्टेंस कब आएगा? जब पार्टिकल टाइम के हिसाब से मूव करेगा, टाइम चेंज होगा। अब देखो हमने टाइम में तो चेंज ले आए, ले आए ना, Yes, sir. टाइम तो चेंज कर दिया। तो डिस्टेंस भी क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी नहीं हुई है, बताओ। Change हुई होगी, sir. और कितनी चेंज हुई होगी? बहुत 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 कम। तो क्या हम नहीं कह सकते कि वी आर स्टैंडिंग ऑन 2 सेकेंड ही? क्या हम कह नहीं सकते? हालांकि छिप छिप के कहना है ये बात, एकदम से नहीं बोल देनी, पता लग जाएगा ना मैथमेटिक्स को। क्या हम कह सकते हैं ना कि हम 2 सेकेंड पर ही हैं अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, Yes. तो मैंने क्या कर दिया, इसे खींच करके मैं इस टाइम स्टैम्प को यहीं पे ही ले आया, वेरी क्लोज टू T2 T1। ठीक है, तो इसे अगर मैं बताऊं दिस इज द एवरेज, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? लेट मी शो यू हियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे बोलूंगा? कैन वी से दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा, बताओ कह नहीं सकते क्या? डेल्टा टी मीन्स द डिफरेंस ऑफ टाइम, और डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे देखो क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है कि नहीं है? ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो। और वही तो हमने यहाँ पे किया 2 सेकेंड और 2.1 सेकेंड पे, है ना? विच मीन्स कि ये जो अब मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आएगी, T1 पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं ds/dt। ये क्या है? v इंस्टेंट। ds/dt मतलब हो गया वेरी इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनफाइनाइटेसिमल टाइम, बहुत 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 छोटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बहुत 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 छोटा टाइम। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई? जो अनम्यूट Yes, करके sir. बोल रहे थे वो भी बोलो भाई। हाँ, चलो ठीक है फिर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट मी शेयर अ पोल विद यू, you just have to answer that poll, and then
If anyone has any kind of doubt, you can stay back and ask to me, and otherwise you can leave the lecture. ठीक है? Thank you so much for being attentive and being responsive in the lecture. ऐसे ही रेस्पॉन्सिव रहे तो बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको. ठीक है? बाय बाय, टेक केयर. आप पोल में रेस्पॉन्स करके जरूर जाना भी. ठीक है, मतलब इट्स योर चॉइस. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव योर टी, स्नैक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव राइट नाउ. Thank you, sir. Bye, sir.